So, good morning, friends. Today we'll be taking some discussion. Just a minute. Okay. So, good morning, friends. Today I am going to discuss with you around 6 to 7 questions of geography, which may comprise of the previous year UPSC prelims questions as well. So, the basic theme behind discussing all these questions is to just give you an idea or some tricks to solve the prelims type of questions, the MCQs types of question in which we are looking some of the aspects. You know. For example, let us start with our first question. This is the question asked in UPSC 2022-2020. Okay, so this see with reference to the water on the planet Earth, consider the following statements. The amount of water in the rivers and lakes is more than the amount of groundwater. Is it correct? Is this statement correct? Let us not go into the correctness or the wrongness of the statement at present right now. We just read this statement. The amount of water in the rivers and lake is more than the amount of groundwater. Okay. The amount of water in the rivers and lakes is more than the groundwater. It is saying this. The amount of water in polar ice caps and the glaciers is more than the amount of groundwater. Means polar ice caps and glaciers is more than the groundwater. So before coming on to the conclusion of this question or coming on to the correct answer of this question, just we have we can look on the diagram of the share of the or the distribution of the water on world's water. Okay, see this diagram. In this diagram, it is clearly mentioned that if we have 100% of water, है ना, अगर हम बात करें, if we talk about the percentage of Earth's surface, है ना, उसमें कितना परसेंट वाटर है और कितना परसेंट लैंड है, तो अराउंड 70% जो है वो वाटर है एंड 30% जो है वो लैंड है. ओके, तो दिस 70% को हम एज ए 100% वाटर कंसिडर करते हैं एंड देन वी फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर. तो इस 100% ऑफ वाटर में 97% जो हमारा है वो ओशन है, मीन्स सॉल्ट वाटर है ना, इट इज़ नॉट अ फ्रेश वाटर, एंड द रिमेनिंग 3% इज आवर फ्रेश वाटर. अब इस 3% को हमने एज ए 100% फ्रेश वाटर लिया है, 100% फ्रेश वाटर. अब इस 3% में मतलब जो 100% फ्रेश वाटर है उसमें आइस कैप्स एंड ग्लेशियर कंप्राइजेज ऑफ 79%. 79%, somewhere you will find the data may range from 68 to 79%. Okay, so don't be confused with this data. Just remember that maximum fresh water is in the ice caps and the glaciers. Then 20% of this 100% fresh water is groundwater, means ice caps and glaciers have more fresh water than groundwater. The second statement we just read before, है ना? So that second statement is correct. Then accessible surface fresh water. Surface fresh water में कौन कौन से आएंगे आपके? Rivers आएंगे, lakes आएंगे, है ना? Ponds आएंगे, then soil moisture आएगा. All these comprise of the surface fresh water. अब इस 1% को अगर हम 100% कंसिडर करें तो उसमें लेक्स 52% है, देन वाटर विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म 1% है, रिवर्स में 8% है, वाटर वेपर्स 8% है, सॉइल मॉइस्चर 38% है. So the first statement we just read, the amount of water in the rivers and the lakes is more than the amount of groundwater. This statement is absolutely wrong. Second statement is correct. Therefore, the answer will be 2. Clear? Now coming on to the second question. Consider the following statements. In the tropical zone, the western section of the oceans are warmer than the eastern sections owing to the influence of the trade winds. Suppose this is our globe. This is equator. This is, we mark this as the है ना zones of this earth. This is यहाँ पर ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर में हमें which type of winds we generally used to see, these are called as trade winds. Then
we call them as westerlies, and these are easterlies, है ना? So in the tropical zone, this is the zone it is talking about, this tropical and subtropical zone. The western section of the oceans, this is east and west. Western section of the oceans are warmer than the eastern sections owing to the influence of trade winds. Obviously, this is statement is correct because of the trade winds. But suppose this is our land and this is again land and this is ocean in between the land. ठीक है? तो ट्रेड विंड्स कैसे होंगे? ट्रेड विंड्स आर ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी, है ना? अगर हम ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो ईस्टर्न में फ्रॉम लैंड टू सी एंड फ्रॉम वेस्टर्न में फ्रॉम ओशन टू लैंड. ठीक है? तो what what happens when these trade winds blow? These trade winds will drag the eastern margin, है ना? This is the eastern margin of ocean. This is the eastern margin of ocean and this is the western margin of ocean. So these trade winds will drag these eastern waters of the ocean towards west. ठीक है? These winds are also responsible for the formation of ocean currents. ठीक है? Primary source of the formation of the ocean currents is the winds. तो ये जो ईस्टर्न मार्जिन वाला जो वाटर है ये ड्रैग करेगा और इसको वेस्टर्न मार्जिन में लेके जाएगा. यहाँ पर जो होगा ये ऑब्वियसली सरफेस वाटर है. सरफेस वाटर विल be a warm water, but this warm water will be dragged to the western margin and compiled on the eastern margin of the land. Don't be confused, but I'm using the eastern margin of land and the western margin of the ocean. With respect to the land, this is the eastern margin, but with respect to the ocean, this is western margin. ठीक है? तो ये warm waters will be compiled on the western margin. तो question क्या है? In the tropical, in the western section of the ocean, this western section of the oceans are warmer than the eastern section owing to the influence of trade winds. Correct. Understand? Then the temperate zone westerlies make the eastern section of the ocean warmer than the western section. Which is our temperate zone? This is the temperate zone. The one I am highlighting with the blue. This is temperate zone. Again, the same thing. If I have this landmass here and landmass here and in between ocean. So westerlies are blowing in this direction, and when the westerlies are blowing in this direction, this is the western margin of ocean and this is the eastern margin of ocean. So when westerlies are blowing in this direction, they drag this western ocean water towards the east and warms the eastern margin of the ocean. ठीक है? The temperate zone westerlies make the eastern section of oceans warmer than the western section. This is also correct. The answer will be 2. This is static question. Static understanding you need to have. Therefore, reading of NCRTs and GC Leong becomes important because you must know about the basics of this thing. Okay. Okay. Next question. Consider the following statements. The following sets of countries border the Black Sea. Now I will give you a trick to remember the countries which border in the Black Sea. Why I am taking this Black Sea? Because it is in very much news. News में क्यों है? Because of Russia and Ukraine. Because of Russia and Ukraine war, है ना? And in February it completed 1 year, and it has a repercussion on the world as well as India. इंडिया के लिए क्या कंसर्न्स हैं? यस टेल मी, इंडिया के लिए क्या कंसर्न्स हो सकते हैं? इंडिया के लिए कंसर्न्स है नंबर 1 फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी. ठीक है? बिकॉज इंडिया इज द ग्रेट इंपोर्टर ऑफ फ्यूल एंड फर्टिलाइजर फ्रॉम रशिया. ठीक है? नंबर 2 क्या होगा? चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स.
changing geopolitics. Why? Because the world is divided between two sections. है ना? One is supporting Russia or not supporting Russia. For example, China. China is getting closer to the Russia, which is again an implication or have a repercussion on India's relations. Okay. And then Ukraine is supported by US. Again, what is the concern for the India is that yes, India is partner to these, है ना? It is partner to these multilateral to these countries for example Russia and USA at multilateral forums. For example, India is partnering Russia with in BRICS and SCO with USA क्वाड. ठीक है, तो इंडिया के लिए बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है ये. But yes, India has taken a stand that it will not intervene in the internal affairs of Russia and it abstained from the voting in the UN also. ठीक है. So now considering this Black Sea, तो ब्लैक सी को याद करने के लिए वी हैव अ ट्रिक कि ब्लैक सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज होती हैं. ब्लैक सी सम लाइक दिस. तो हम याद कर सकते हैं टर्किश बर्गर. Turkish burger are the countries which are bordering Black Sea. Means we'll have a party in Black Sea with Turkish burgers. Means which are the countries? Turkey. B is Bulgaria, Ukraine, Romania, Germania, and Russia. Got it? Now कौन कौन सा हो सकते हैं? टर्की, ग्रीस, रोमानिया. ग्रीस नहीं है, रोमानिया है, टर्की है, बुल्गारिया है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है. करेक्ट. रशिया है, ग्रीस नहीं है, बुल्गारिया है, यस, रोमानिया है, मोल्डोवा नहीं है, यूक्रेन है, यस. तो आंसर विल बी बी. लेट अस सी द डायग्राम और द मैप. सी, दिस इज द टर्की, दिस इज बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया एंड जॉर्जिया. ठीक है, so these are the countries which are bordering the Black Sea. But again, here you have to see the important states as well because UPSC may ask you, है ना, this is the very important area or region from where UPSC can frame a question. Ukraine. ठीक है. Number one point which you must be remember or see that yes, there is a Kerch state which is connecting Sea of Azov to Black Sea. ठीक है. Number one. Number two, Bosporus Strait. Bosporus Strait is connecting Black Sea to Sea of Marmara. ठीक है. Number two. Number three is Dardanelles Strait. Dardanelles Strait is connecting Sea of Marmara to Aegean Sea. Aegean Sea is connecting with the Mediterranean Sea. So these things you must remember. Again, the river Dnieper and Dniester. ठीक है. These are draining into the Black Sea. ठीक. So this is the region which is in news. है ना. Moldova is a landlocked country. It is not लैंडलॉक. तो हम बोल ही सकते हैं मतलब इट इज नॉट बॉर्डरिंग विद द ब्लैक सी. अगेन ग्रीस इज नॉट बॉर्डरिंग विद ब्लैक सी. ठीक है. तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन. अब इसमें आपको करना कुछ नहीं है. यू जस्ट हैव टू गो थ्रू ईच वाटर बॉडी इन द मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया एंड द साउथ ईस्ट एशिया और उसके चारों तरफ बस जस्ट गो थ्रू फॉर 5 मिनट्स इन अ डे. आप बस 5 मिनट के लिए एक रीजन को पकड़ के उसमें देखते रहो एंड यू विल रिमेंबर ऑल द थिंग्स. ओके. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statement. Jet streams occur in the northern hemisphere only. Only. This term is absolutely है ना absurd term. It is a vague term. Northern hemisphere में है तो southern hemisphere में क्यों नहीं है? Why? तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना. So this statement is outrightly we can reject it. तो वन को हटाओ, वन को हटाओ. नाउ विल हैव 2 and 3. मतलब 2 तो सही है तो हमें देखने की भी जरूरत नहीं है. नाउ कंसिडर दिस 3.
The temperature inside the eye of a cyclone is nearly 10 degrees Celsius lesser than that of surroundings. If we draw the diagram, of the cyclone, so in this under this is the eye of a cyclone, and we see this rising of the air. In the eye, what we see, the calm region, or the air is subsiding in the eye, subsiding in the eye. जब एयर सबसाइड करता है तो क्या होता है? देयर विल बी एन एडियाबैटिक हीटिंग. तो अगर एडियाबैटिक हीटिंग होगा तो क्या होगा? यहाँ पर टेम्परेचर विल बी मोर देन द सराउंडिंग. ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर लेस नहीं होगा, इट इज़ नॉट लेस, इट विल बी मोर इन द आई ऑफ अ साइक्लोन देन द सराउंडिंग टेम्परेचर. दैट इज वाई टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा? देयर विल बी ए लो प्रेशर, एंड which is the required condition for formation of the cyclone. Third statement is also incorrect. ये भी गया. The answer will be C. Correct. Now coming on to the question with respect to the locations in India. Siachen Glacier is situated to the ईस्ट ऑफ अक्साई चीन. अक्साई चीन कहाँ है? सपोज अगर मैं ऐसे मैप बनाता हूँ अपना इंडिया का, तो दिस विल बी द अक्साई चीन, एंड आई हैव सियाचिन ग्लेशियर समवेयर हियर. ठीक है, तो ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, नो इट इज इन वेस्ट ऑफ अक्साई चीन, ये नहीं है. ईस्ट ऑफ ले, अगेन दिस डिस्ट्रिक्ट इज ले, तो ईस्ट नहीं है, ये भी वेस्ट है. नॉर्थ ऑफ गिलगिट, गिलगिट इज हेयर समवेयर, है ना, इट इज नॉट नॉर्थ ऑफ दिस, तो ये भी नहीं है. नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, यस दिस इज द नुब्रा, है ना, ये यहाँ से नहीं होती, यहाँ तक ये है नुब्रा. दिस इज द नुब्रा. एक्चुअल में यहाँ पर क्या है कि NJ9482, है ना, ये हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है LOC का. तो जो भी विवाद में भी है, एंड इट इज ऑल्सो इन डिस्कशन एंड इन, है ना, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है कि आप नॉर्थ ऑफ NJ9482 के ऊपर ही आप मेंशन करोगे, तो इट इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. तो आंसर विल बी डी. therefore you must know, or you must see that this region of India, northern part of the India, and ahead of the India, with respect to the glacier plus the mountain ranges, ठीक है, plus river, for example, in this river system, in this river system, इसकी tributaries वगैरह ये सब आपको देखनी है. See this the diagram. This is what I am taking NJ9842. तो यहाँ से पाकिस्तान बोलता है कि नॉर्थ होगा बाउंड्री, therefore they claim Siachen to be their territory, but India will say that no, it is along the Nubra. यहाँ पर इंदिरा कोल तक ये ऐसे जाएगा, यहाँ तक हमारा ये पॉइंट होगा, है ना, लाइन होगी, तो therefore Siachen will be in our territory. This is the Pakistan occupied Kashmir. ठीक है, यहाँ पर ये अक्साई चीन है. दिस इज द नुब्रा, नुब्रा रिवर, ये दिख रही है नुब्रा रिवर, तो नुब्रा रिवर के ऊपर ही जस्ट ये सियाचिन ग्लेशियर है. ठीक है, दिस पार्ट. Okay, coming on to the next question. Why are dewdrops not formed on a cloudy night? तो अगर हमें ड्यू ड्रॉप्स चाहिए, है ना, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? ड्यू ड्रॉप्स, ड्यू इज ए फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन, पहले तो ये पता होना चाहिए. कंडेंसेशन, इट इज अ टाइप ऑफ कंडेंसेशन. कंडेंसेशन कैसे होगा? व्हेन द वाटर वेपर्स कंडेंसेस टू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, है ना. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मतलब कि जो वाटर वेपर है जस्ट कंडेंस हो जाए, उसको हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं, मतलब कि वो वेपर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, इसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. ड्यू ड्रॉप्स अगेन जो हम सुबह सुबह देखते हैं सर्दियों में, ओस की बूंदे जिसको हम बोलते हैं, है ना, तो उसको हम ड्यू बोलते हैं. तो ऑन अ क्लाउडी नाइट में क्यों नहीं फॉर्म होती है? क्लाउड एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सरफेस. क्लाउड एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये एक रीजन हो सकता है, बिकॉज अर्थ पे जो रेडिएशन आती है, these are short wave, and then earth absorb them and then reflect as a long wave radiation, terrestrial radiation. So these radiations are absorbed by the clouds and it keeps the atmosphere warmer. ठीक है,
तो ये एक रीजन हो सकता है, बट वी हैव टू सी इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल फाइंड है ना क्लोज स्टेटमेंट्स, बेस्ट स्टेटमेंट यू हैव टू पिक अप. Clouds reflect back the Earth's radiation. Again, जब ये clouds absorb करेंगे, obviously they reflect back this radiation and make the surface warmer. And make the surface warmer. ठीक है? So this is correct. Then Earth's surface would have low temperature on the cloudy nights. No, low temperature हो ही नहीं सकता अगर cloudy nights हैं. Low temperature के लिए clear sky चाहिए. Clear sky होगा तो क्या होगा? These radiations, जो long wave terrestrial radiations हैं, they will get enough time or no hindrance in escaping to the space and thus cooling the Earth's surface. Then cloud deflect the blowing wind to ground level. This is again an absurd statement. So best option will be B. ठीक है? Okay, next question. Among the following cities, which one lies on longitude closest to that of Delhi? ठीक है, यहाँ पे डायग्राम देखते हैं, इसके थ्रू हम समझेंगे. तो ये क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली का है. अगर हम ये लॉन्गिट्यूड की हम बात करें, यहाँ पर यहाँ पर सॉरी मेरी स्ट्रेट लाइन नहीं बनी, बट यस बेंगलुरु कहीं पे यहाँ पे है ना. तो इट इज क्लोजेस्ट टू दिस. तो ऑप्शन में दिया है हमारे पास हैदराबाद. हैदराबाद इज समवेयर लाइक हियर, है ना. देन नागपुर, नागपुर इज समवेयर हियर, and then Pune is somewhere here. So the Bangalore is the closest. We can easily mark. But now why this type of question I am showing you, because you may find है ना number of states through which Tropic of Cancer passes. तो ये भी आपको पता होना चाहिए. Then which capital city is closest to Tropic of Cancer? ठीक है, जो हमारे 8 स्टेट्स हैं ऐसे, तो उनमें कौन सी कैपिटल सिटी कितने पास है. नंबर 3 IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो मेरिडियन है ना, जो लॉन्गिट्यूड है, वो कितने स्टेट से पास होता है. फ्रॉम हाउ मेनी स्टेट्स इट पासेस. ठीक है. तो such type of question you may find in UPSC. That's why this type of question or this type of awareness is also required. Okay, next question. Mediterranean Sea is border of which of the following countries? Again, why I take this question again, because I told you that the Central Asia, the Middle East, and the Southeast Asia are the favorite areas of UPSC from where it picks the question and give you simple question, location based question. So you must know about all these things. You know? Jordan is not border with the Mediterranean Sea. It is a landlocked country. You know? Jordan has been asked several times by UPSC. Iraq is not again the country which is bordering Mediterranean Sea. It is on the it is ये आपको वहाँ पर है ना दूसरी साइड में है. It is not on in this side. Then Lebanon है, Syria है. 3 and 4 will be your correct answer. Okay. Now let us look at the atlas, so things will be more clear. कौन सी कंट्री है देखो. फ्रांस, स्पेन, ठीक है. Then you have Monaco, then Italy, फिर है आपका स्लोवेनिया, then बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनिग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, है ना, क्रोएशिया, फिर आपका आता है टर्की, यहाँ पर है सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, जॉर्डन नहीं है सॉरी, नॉट जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इजराइल. देन साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, मोरक्को, अल्जीरिया, tunisia, libya and egypt. Again you can learn this South African countries, है ना, African continent countries, African countries in this manner only. MATLE, metal, है ना, with the name of metal.
because you may be asked which of the countries are of African continent borders Mediterranean Sea. Apart from these countries, you must also know the islands in the Mediterranean Sea. For example, Sicily Island. It is very famous for, yes, very famous for. Tell me, ठीक है. Search. It is your homework. Then Cyprus. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. Ionian Sea, Aegean Sea, है ना. Then और Sardinia, है ना. Corsica. These all are islands in the Mediterranean Sea. तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है. So thank you very much for your patience. I hope these questions find you, और है ना, इन क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा और अवेयरनेस मिला होगा. अगले सेशन में हम फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए